हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग सरप्राइज़ होंगे कि कैसे मुझे न्यू वीडियो में देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज इंग्लिश के बारे में इस इंग्लिश की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इंग्लिश के बारे में बताऊँगा और मेरे पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इसके डिस्क्राइब करेंगे। So I will speak in Hindi and I will speak in English as well. In both the languages I will speak. So first of all, let me introduce myself. This is Muhammad Aslam, and today I'm going to teach you about the English. There is a lesson which I am trying to deliver to you. So let's start a video. मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, लेट मी टेल यू द फर्स्ट थिंग। टुडेज लेसन इज़ हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आप कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे किक ऑफ कर सकते हैं, हाउ कैन यू किक ऑफ द कॉन्वर्सेशन, हाउ कैन यू मेक द कॉन्वर्सेशन बिग, बिकॉज इन द स्टार्टिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर द पीपल to start the conversation in English. But there are few points which I have already mentioned. With the help of these points you're gonna speak a lot of good English, and you're gonna grab some of the things, you will understand so many things, you will write so many things, you will speak so many things. तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप अपने आप को होल्ड रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं वीडियो में ट्राई करूँगा एज बेस्ट एज जितना अच्छा हो सकेगा, मैं पॉसिबल वे होगा मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा। एंड आई विल give you some details in English and some details in Hindi as well. So let me start the topic. आज का हमारा जो टॉपिक है conversation information. How can we start the conversation? Conversation को कैसे स्टार्ट करें, कैसे इसके बारे में डिस्कस करें। The first point is how can you start the conversation? The first point is general sentences. Let me take here general sentences. Whenever you are going to start the conversation, you have to keep on the general sentences. Like let me tell you, this is the marker. So whenever you are going to start the conversation, you need to start from like this. This is the marker. The color of the marker is white. What is the size of the marker? Maybe it is 6 inch or 7 inch. What can I say? What is the color of this marker? In these type of questions you can form, and basically you need to form the question first. After that you need to answer from yourself as well. What is the color of the marker? The color of the marker is white, and the color of this marker cap is black. So this is how you are going to form them. What is the shape of this marker? The shape of this marker is round. So this is how you are going to start the conversation. And let me tell you, general sentences, you need to make general sentences. What do you take? What do you prefer in the morning breakfast? What do you eat? What kind of food you are taking? In general sentences, whenever you are meeting with anyone, you can start the general sentences like at what time you wake up, किस टाइम पे आप उठते हैं, किस टाइम पे सोते हैं, and what do you do, मतलब आप क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या करते हैं। ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जनरल सेंटेंसेस से आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, किक ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो आपको हेल्प करेगा। जनरल सेंटेंसेस आप अपने माइंड में ये सारे पॉइंट रखें, एंड आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज़ ओपन द नोट पैड एंड राइट डाउन देयर, so that it will help you after some time. You will revise all these chapters, and it will be helpful for you to improve your English. Second point, basic descriptions. You must have basic description about anything, whatever you are going to speak. Like let me show you. This is the water bottle. The name of this water bottle is nature. So nature, the name of this water bottle is nature, H2O. So what is the color of this water bottle? It is transparent, and the label is green, fully green, and the cap is green as well. So how much quantity it can contain? It can contain 1 liter water. आप इसके बारे में ऐसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। बेसिक डिस्क्रिप्शन इसके बारे में कैसे बताएंगे? आपको ये बताना है कि इस बॉटल का साइज़ क्या है, इसमें कितना अमाउंट पानी आ सकता है, और इसका कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट है या कौन सा फॉर्म में है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप सेकंड पॉइंट हमारा हो गया, बेसिक डिस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी बता दिया। जैसे आपके आसपास जो भी आपके अराउंड आसपास चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पेन हो गया, तो पेन के बारे में यू कैन डिस्कस अबाउट पेन एज वेल, यू कैन डिस्कस अबाउट रेड कलर एज वेल, वट एवर द शर्ट, लाइक आई एम वेयरिंग द ब्लू शर्ट, सो you can speak about the blue shirt. Why do you which type of shirt you are wearing, which color do you like to wear in the morning, and focus. So you need to focus on the topic as well, very well, because your wires should be connected before speaking anything. Like आपको यहाँ के तार यहाँ से कनेक्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप
बहुत केयरफुली जब भी आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में बैठे तो आप चीज़ों को बहुत कीन तरीके से ऑब्जर्व करें। आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करनी है, तभी आपके पास इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन के पास पॉइंट आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक स्मॉल बच्चे होते हैं, उनके पास जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई ग्रामर की नॉलेज नहीं होती, उनके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं होते, बहुत सारे पॉइंट नहीं होते, बट वो क्या होता है, हमारे पास ब्रेन में इतनी एबिलिटी होती है, हमारा ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है इस चीज़ का, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक उनके पास पॉइंट आते रहते हैं। आप जब चीज़ों को फोकस करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, when you will see the things very carefully, when you will see the things and you will observe the things very carefully, then automatically the points will come in your brain. And there are a number of words in India, I am telling you, there are a number of words in India we know very well, but we do not know how to use it. So with the help of these I will tell you how can we use it, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इम्प्रूव फ्लुएंसी। If you are working on these parts, if you are working on these points, automatically your fluency will come, the fluency which you are trying to find within 6 months, 4 months. I am not making the guarantee, but I am making the promise that if you are going to follow my channel, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि 6 मंथ और 5th मंथ में आपको इंग्लिश पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फ्लुएंसी मैटर करती है, फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी, तो आपको ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। और ये पॉइंट मैं बता देता हूँ, स्पीक लॉन्ग टू कॉन्वर्सेशन। whenever you are going to start any conversation, any topic about politics, about cricket, about your favorite game, about your favorite movie, then you need to keep the conversation long, because once you keep the conversation long, it will be easy for you to make the points, like who is your favorite player? Virat Kohli. My favorite player is Virat Kohli. Then you need to keep asking the question, what kind of activities, what kind of yoga and exercise he is doing for becoming the fittest person in the world. So you need to keep asking these type of question, keep long and long. This conversation should go long and long. आपको conversation को long and long करना है, जिससे आपका ये जो क्वेश्चन होगा, जो जितने भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे उससे आपको बेनिफिट होगा। आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका क्वेश्चन लॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे इंग्लिश में उतना बेटर होगा, आपका फ्लुएंसी उतना बेटर होगा। ट्रेन योर सेल्फ फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, आपके ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे हमें हिंदी आती है, बट होता क्या, हम स्टेज पे उसको बोल नहीं सकते। हमें कोई कह दे कि आपको स्टेज पे जाना है, आपको स्टेज पे स्पीच देनी है, बट हिंदी हमें आती है बेसिकली, हम सब जानते हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम स्टेज पे जाके वहाँ से फियर ऑफ स्टेज जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा लो हो जाता है, इसकी वजह से हम बोल नहीं पाते। सो वंस वी गो ऑन द स्टेज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द लॉट ऑफ पीपल to go there and give a good speech and motivate the other people, but once you train your brain very well, then it will help you a lot to speak very good English, and whatever you are keeping in your mind, in your heart, that 100%, I'm not saying 100%, but 60%, 70%, it will be easy for you to deliver that speech, the person who is listening to you very carefully. So you need to train your mind as well. Sixth point, which I am going to tell you, do not use complicated word. Once you are going to learn the English, you need to understand this thing very well. You should not use very complicated word, otherwise people will get confused. So those who are listening to you, those who are watching to you, those who are listening over the phone, hearing over the phone, it will be difficult for you to understand. And once you will, if you are going to use the difficult and complicated word, people will lose the confidence and they will not feel comfortable, and the conversation will end up. So that is why I am saying you need to use the simple word so that people can understand, और आपको वो समझ सकें। आप सिंपल वर्ड को यूज़ करें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, आपका स्टार्टिंग लेसन है तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स पे नहीं जाना, आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ करने हैं। और मैं 7th पॉइंट बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज टू बिकम लॉन्गर टाइम इन माइंड। आप लैंग्वेज को कैसे बहुत टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए आप अपने ब्रेन में रख सकते हैं। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको लैंग्वेज को बहुत टाइम पीरियड के लिए आपको ब्रेन में रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, आपको जो आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन देखते हैं। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप इन द मॉर्निंग, दैट डू वन थिंग, keep such type of app. Those app will help you to find the new words, find the news, and whatever you are doing, the clip you are watching, whatever the reel you are watching, you need to watch those reel in English as well, so that it will help you to become a good speaker and understand all those things. So for long period of time, you need to, the movie you are watching, whatever the time you are wasting, whatever the hobby you have,
convert that hobby into English. Like if you are keen to watch the movies, then what you need to do, you need to watch the English movies. And if you like to watch the serial and dramas, then you need to convert your habit, you need to change your habit, you need to watch the English drama. And make the friend make those communicate with those friends in long period of time, so that they will help you to improve your English as well. Point number 8 मैं आपको बता देता हूँ. Does not matter. The biggest thing we all have is a fear of people. What the people will think, what the people will think, what they will say if I make the mistake, if I speak in front of the people, what they will think. Whatever I am doing, maybe they will complain about my mistake. No, you don't need to worry about these things. What you need to do, whatever the words which is coming in your brain, you need to take it out. You need to take it out, so that the fluency will come. The fluency will come, and that your brain will become habitual of those words, and automatically you will use those words. So do not fear from the people, and from your family members, from your relatives, from your friends, whoever is watching you. Try to be comfortable with them and watch the English movies, and whatever the movie you are watching in English, it should be English. And too many options, you have too many options, I can say. We all have too many options. Like we have the mobile phone, we have the newspaper, wherever we are going, in the restaurant, wherever we are going for the market, we have the product which we are purchasing. In that product, the description is available. We need to read the description very carefully. And those who are parents, those who are watching my channel, they need to do one more thing as well. Whenever they are going for the meeting, for their children's meeting, there are some housewives, they are also interested to learn the English, but it is very difficult for them to learn from somewhere. यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे हाउसवाइफ होंगे, जो मेरे चैनल को देख रही होंगी, बहुत सारी सिस्टर्स होंगी, बहुत सारी मदर होंगी जो मेरे चैनल को देख रही होंगी. उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि कैसे हम इंग्लिश को लर्न करें. मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. आप बाहर जाते हैं मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो, उस पर सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन उसका इंग्लिश में होता है. आप उसको रीड करें, और आप एटलीस्ट कुछ भी ना करें तो मेरे वीडियो को देखें. दोज who do not know what to do, watch my video in English. मेरी वीडियो को ही इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप देख के जाएँ. Automatically you will get the information, you will gain, because your mind has this much power, it will grab all these things. So yes, so if you are talking about the product, if you are talking about any product, then what you need to do, you need to talk about the shape of the product, made, how it is made, कैसे ये बना, और फ्रॉम वेयर इट केम, कहाँ से ये आया. जैसे मैन्युफैक्चरर इसका कौन है, इसकी कंपनी कौन है, अब इसके बारे में बात कर सकते हैं. व्हेन इट इज़ लॉन्च, व्हेन डिड इट लॉन्च इन द मार्केट, ये मार्केट में कब आया, और हाउ कैन वी यूज़ इट, वेयर वी कैन वी यूज़ इट, एंड यूज़ वी नो दैट. So these points you need to take care of and repeat. Whatever the exercise you are doing, whatever the video you are watching, whatever the essay or article you are reading, read it again. Repeat that thing again. It will be easy for you. You need to repeat those things. You need to revise those things. You need to come up with new ideas. आपको कैसे किस ideas के साथ आने हैं वो आप better जानते हैं. सबके पास information होती है. The homework which I would like to give you. This is the homework. You need to complete it. This is the word tendency. मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ. दिस इज़ द वर्ड इज़ टेंडेंसी. आपको इसकी मीनिंग फाइंड करनी है और इसको कमेंट में मुझे मीनिंग बतानी है. यू नीड टू टेल मी द मीनिंग एज वेल. And one more word which I am going to give you, which is very important, piece of information. What kind of piece of information you have? What kind of piece of information you have? आपके पास इस मार्कर के बारे में कितनी piece of information है, वो आप मुझे बता दें. तो इस वर्ड को ऐसे यूज़ करेंगे, piece of information. I have already given you some piece of information about English, so you need to learn it. This is also very much important point. Approach forward. You need to approach forward. Approach forward means you need to, whenever the conversation is happening, you need to come forward. You need to participate in that conversation. You need to keep on asking the question related to the topic. You need to keep on thinking about the topic. What kind of question I can put here? What kind of question I can ask to the people?
if the topic is related to politics, then you need to think about the question, what kind of question I can put, किस तरह के question मैं पूछ सकता हूँ, and you need to keep moving. You don't need to stop. Once you stop, it will be difficult for you to go again. Otherwise, your fluency will also go down. Your confidence level will also go down. So that you need to keep approaching and keep approach forward. सो आज का ये ख़त्म हो गया लेसन। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी और बहुत सारी वीडियो आने वाली है, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसको। और दिस वाज द बिगनिंग, ये स्टार्टिंग थी, इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली है जो थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। मैं इसलिए बहुत सारे हैवी मटेरियल नहीं लेके आया। मैं हैवी मटेरियल लेके आ सकता था, बट मैंने सोचा आपको कैसे कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लाना है, आपको कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।